Very good morning, students. Welcome back to our value education class. So, in value education, lesson number 4, our animals, page number 13 in your value education textbook. So, now let's understand the lesson. Let us take a look at the amazing world of animals and see how useful they are to human beings. So, this world is too amazing, students, and there are so many animals in this world, and many of the animals are very useful, helpful to human beings in so many ways. These animals gives us milk, which is very essential for our growth. Butter, cheese, curd, and ice cream all are made from milk. Yes, this as many animals gives us milk. For example, cow, buffalo, this animal gives us milk. And milk is extremely important to us. And from milk we get butter, cheese, कर्ड इन द सेंस दही दही हम लोग खाते हैं ना, सो उसको इंग्लिश में कर्ड बोलते हैं. आइसक्रीम, वो ये सब चीज़ मिल्क से बनी होती है. So milk is very important to us. Hens and ducks gives us eggs. Some animals make our tasks easy by carrying loads. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो हमारा काम बहुत इजी कर देते हैं बाय कैरिंग लोड्स. कुछ भी भार होता है वो अपने पीठ पे उठा लेते हैं. और जो डोंकी है, फॉर एग्जांपल, डोंकी यूज टू कैरी लोड्स. कैमल, ये सब एग्जांपल्स हैं जो एनिमल्स है जो कैरी लोड्स करते हैं. Horses, camels, buffaloes, and donkeys are used for pulling carts. These are the animals they are used to pulling the carts. Bullocks help to plow field. हम लोग खेती बाड़ी में देखते हैं bullock is very useful for plowing the field. Elephants pull heavy logs of wood. Do you know where the wool which is used to make warm clothes come from? Yes. Who gives us wool, students? जब हम लोग विंटर सीजन आती है, स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, ये सब किससे बनता है? Yes, it is made up from wool. And from where we get wool? Yes, sheep gives us wool. We get wool from the sheep. Silkworm gives us silk, and that is used to make silk saris and fabric. सो सिल्कवॉर्म से हम लोगों को सिल्क साड़ीज़ मिलती है. जब हम लोग कोई भी ओकेशन में सिल्क की साड़ीज़ पहनते हैं, सिल्क के फैब्रिक कोई भी जैसे कपड़े पहनते हैं, सो दैट इज़ मेड अप ऑफ सिल्क. एंड फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रॉम सिल्कवॉर्म्स. Dogs are kept at home as pets. They guard our house. Police dog help policemen to catch thieves. Yes, dogs are kept as pet. कोई कोई घर में छोटे पपी को भी पालते हैं. So they are known as home as pets. And many dogs guards our house. And पुलिस डॉग्स यूज टू पुलिसमैन टू कैच द थीव्स. चोर को पकड़ने में डॉग्स बहुत यूजफुल होते हैं. सो डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल. कैट्स स्केयर mice away from our house. Thus, you can see how animals are useful and important to us. कैट माइस को कैच कर लेता है. हमारे घर में चूहा होते हैं, वो कैट चूहे को स्कैर कर लेता है, पकड़ लेता है फ्रॉम आवर हाउस. सो इन दिस वे मैनी एनिमल्स आर यूजफुल टू अस एंड दे आर वेरी important to us. We should be kind to them.
Do you know that animals also feel the way we do? एनिमल्स लोग बोलते नहीं है पर वो लोग खुश होते हैं, वो लोग गुस्सा होते हैं, वो लोग रोते भी है, दे यूज टू क्राई, वो लोग डर भी जाते हैं, जस्ट लाइक अस। सो नेवर थ्रो स्टोन्स ऑन देम, उनके ऊपर कभी भी स्टोन्स थ्रो नहीं करना है। एंड यू शुड नेवर बी अनकाइंड टू देम, सो नेवर टू बी हार्श, बहुत गंदी तरह से बात भी नहीं करना है। सो एनिमल्स कैन ऑल्सो बी अ फ्रेंड, हम लोग को भी एनिमल्स फ्रेंड की तरह रख सकते हैं। वेन एवर यू पेट और फीड देम, सी हाउ दे रिस्पॉन्ड, जब भी आप कोई भी एनिमल को फीड करते हो, कुछ भी खिलाते हो, बहुत प्यार से मन से खिलाते हो, सी द वे रिस्पॉन्स, दे विल नेवर हर्ट यू, दे विल नेवर किक यू, see their response. When dog is happy, the dog used to wag his tail. वो पूंछ हिलाता है. So it says thank you. So animals को भी बहुत खुशी होती है जब हम लोग उनको पैम्परिंग करते हैं. They never forget our love. जो भी प्यार हम लोगों ने एनिमल को किया है वो एनिमल्स कभी भी भूलते नहीं है. And even if you see the dog after many days and many months, they will rush towards you and wag its tail. Means बहुत टाइम के बाद हम लोग डॉग को देखते हैं, अपने डॉग को, सो दे विल रश टू यू, वो दौड़ते दौड़ते आते हैं एंड दे वैग इट्स टेल, दे विल नेवर फॉरगेट यू. So now let's see this story, Kind Siddharth. Little Siddharth was a prince. Once he was playing in the garden. A bird fell near his feet. It had been wounded and was bleeding. Siddharth carefully picked up the wounded bird. Just then the hunter who had shot the bird came running. He said, "The bird belongs to me as I shoot it down with my arrow. Give it back." So, in this first paragraph, there was a little prince whose name was Siddharth, and he was playing in the garden. So, one day the bird fell near his feet. एक bird उसकी पैर के पास गिर गया था and उसको बहुत चोट लगी थी and उसको ब्लीडिंग भी हो रहा था. So Siddharth carefully picked up that bird and just then a hunter came running and he said that ये बर्ड मेरा है, मैंने उसको एरो से, अपनी एरो से उसको किल किया है. सो दिस बर्ड इज माइन, गिव इट टू मी. So Siddharth said to the hunter, "You almost killed the bird, but I saved its life." हंटर को बोला कि आपने ये बर्ड को ऑलमोस्ट किल कर दिया है बट मैंने तो उसकी जान बचाई है. सो नाउ किसको ये बर्ड बिलोंग करता है? यस, जिसने जान बचाई है उसको ये बर्ड बिलोंग करता है. सो दिस बर्ड बिलोंग टू सिद्धार्थ. So that hunter felt ashamed and went away. उसको बहुत guilty feel हुआ and he went away. Siddharth took that bird inside and he looked it with great care and love. बहुत अच्छी तरह से उसने bird की देखभाल की. When the bird's wound had healed, Siddharth let him fly. In this way, the little prince grew up to become Lord Buddha. जब बर्ड को वो चोट हील हो गया था, अच्छा हो गया था, then afterwards Siddharth let him fly and he became, and that little prince grew up. वो बड़ा होके क्या बन गया? Lord Buddha. So we should never kill or harm animals.
because wild animals should not be hunted for fun. मौज मस्ती के लिए कोई भी दिन हंटिंग नहीं करना चाहिए. We need to preserve our वाइल्ड लाइफ. सो वाइल्ड लाइफ को अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए. हंटिंग करके कोई मज़े नहीं लेना चाहिए. एंड दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. सो वी शुड बी काइंड टू ऑल द गॉड्स क्रिएचर्स. भगवान ने जो भी चीज़ बनाई है, एनिमल्स, बर्ड्स, कुछ भी, वी शुड बी काइंड टू देम. ओके, सो students, here is one. Now students, on page number 15 in your value education textbook, there is one poem. This poem I'm reading once, then you have to write this poem one time in your value education notebook with good handwriting. The friendly cow, all red and white, I love with all my heart. She gives me cream with all her might to eat with apple tart. She wanders moving here and there, and yet she cannot stray. All in the pleasant open air, the pleasant light of day, and blow by all the winds that pass, and wet with all the showers. She walks among the meadow grass and eats the meadow flowers. So students, read this lesson one time and write this poem one time in your value education notebook with good handwriting. The further portion we will do in the next period. Thank you students. Have a nice day.